This is my fourth session. In this session, we will discuss about land degradation and conservation. Students, land is a prime resource. We perform all economic activities on the land. 95% of our basic needs for food, clothing, and shelter are obtained from land. It supports flora and fauna. But you know that land is a limited resource. Today, land is under great threat. The land resources are facing the problem of land degradation and soil erosion. Students, let us define what is land degradation. Now, land degradation means the decline in the overall quality of soil. The decline in the overall quality of soil, water, or vegetation caused by human activities. Is known as land degradation. Or we can say that the loss of natural productivity. Land becomes unfit for cultivation or unfit for agriculture. That is known as land degradation. Now, total degraded land in our country is 130 million hectares. Now, forest degraded area, that is 28%. Water eroded area, that is 56%. Water eroded area. Now, saline and alkaline land, that is 6%. Now, students, let us discuss the various causes of land degradation. Now, these are some of the causes of land degradation, and these are the methods how to control the land degradation. Causes like... Now, let us discuss the causes of land degradation. Causes of land degradation are the human activities like deforestation, overgrazing, mining, and quarrying. These causes played a major role in land degradation. Human activities aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Here aggravated means भड़काना, यानी उन मानवीय क्रियाओं ने, उन मानवीय गतिविधियों ने लैंड डिग्रेडेशन को, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने, उन मानवीय क्रियाओं ने नेचुरल फोर्सेस को, नेचुरल फोर्सेस यहाँ कौन से हैं? विंड और रेन वाटर, उनको भड़काया है, एंड दैट रिजल्टेड इनटू डैमेज टू लैंड. यहाँ मैं एक उदाहरण दूंगा कि हम अगर किसी क्षेत्र में वनों की कटाई करते हैं, किसी शहर को बसाने के लिए या इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, अगर हम वनों की बड़े क्षेत्र में किसी शहर या किसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए या किसी अन्य कारण हम वहाँ पर बड़े पैमाने पे डिफोरेस्टेशन करते हैं, वृक्षों की कटाई करते हैं, तो वहाँ पर बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे सॉइल इरोजन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है. नाउ लेट अस टेक these causes one by one. The first cause is mining. Mining is the most important human activity that is responsible for large-scale land degradation.
Forests are cleared for mining. Mining sites or areas are left open, abandoned after the extraction of minerals. These mining areas faces water or wind erosion. उन क्षेत्रों में जहाँ खनिज पाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, जहाँ भूमि के नीचे गहराई में मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर हम मिनरल्स को निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनिंग, खनन। और जब वहाँ पर मिनरल्स समाप्त हो जाते हैं तो हम उन माइनिंग एरियाज को खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि जो पवन है और जो रेन वाटर है और जो विंड है, दैट विल क्रिएट soil erosion on a very large scale. That will also affect the soil productivity of that region, and the land becomes unfit for cultivation, and it causes a large scale land degradation in these areas. For example, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Maharashtra are facing this kind of problem on a very large scale. Our second cause is overgrazing. Means पशुओं द्वारा अति चराई, चरना जिसको कहते हैं, घास का चरना। और अगर घास का चरना पशुओं द्वारा अत्यधिक हो जाए तो उसे हिंदी में कहते हैं ओवरग्रेजिंग। Overgrazing is the major reason for land degradation in the states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. Students, आपको पता ही है कि जो घास के मैदान होते हैं, जो घास होती है, वह सॉइल को, मिट्टी को, मृदा को जकड़े रखती हैं। अगर वहाँ पर अत्यधिक पशु वहाँ पर अत्यधिक चराई करेंगे तो जो घास की जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनको वो पशु उखाड़ फेंकेंगे तो सॉइल जो है वो ढीली पड़ जाती है। इट बिकम्स लूजेंट and it is blown by the wind, by the rainwater. Our next main cause is over irrigation. Means अत्यधिक सिंचाई. It is a main reason for land degradation in Punjab, Haryana and Western UP. Students, you know very well that Punjab, Haryana and Western UP are known for canal irrigation. So over here in these states, irrigation leads to waterlogging. वाटरलॉगिंग का मतलब है पानी का अत्यधिक एकत्रित हो जाना, वाटरलॉगिंग, एंड दैट लीड्स टू सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन द सॉइल. मैं यहाँ पर सैलिनिटी का हिंदी में अर्थ बताऊंगा. सैलिनिटी मीन्स लवणता और एल्कलिनिटी मीन्स अम्लता. दैट इज बोथ द वर्ड्स आर रिलेटेड टू एसिडिटी इन द सॉइल, एसिड्स का बढ़ जाना, खारापन, एंड दे आर रिलेटेड टू सोडियम कार्बोनेट. और हम कह सकते हैं कि ड्यू टू वाटर लॉगिंग व्हाट हैपन्स, द ग्राउंड वाटर स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड, द वाटर टेबल increases
And you know, water contains certain salts and they reaches at the upper surface of the earth or mixes with the soil and soil becomes saline or alkaline. मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा. जो एग्रीकल्चरल फार्म्स होते हैं, जो खेत होते हैं जिन जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, वहाँ कुछ ऐसे जो है ज़मीन सेलाइन और एल्कलाइन हो जाती है. ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट पैचेस. ड्यू टू these are the salts. These salts were present in the underground water. When waterlogging took place, the salt present in the water or in the soil beneath the earth's surface, it rises upward, reaches to upper surface of the soil. The water evaporates and the salt remains there. So this makes the region unfit for cultivation. It enhances the infertility of the soil. The productivity of the soil declines. This type of process is common in northern plains, mainly in Punjab, Haryana and UP due to canal irrigation. नहरों के आसपास, केनाल्स के आसपास बहुत बड़ी भूमि, बहुत बड़ी लैंड जो है, that becomes unfertile due to salinity and alkalinity. Now, over irrigation leads to waterlogging, that leads to salinity and alkalinity, and finally it leads to land degradation. Next cause, that is grinding of limestone. For example, these are the pieces of limestone. They are crushed, means, and transformed into cement. This is cement. This is cement, and these are the pieces of limestone. Okay. Now, grinding of limestone for cement industry and grinding of calcite and soapstone for ceramic industries generates or produces huge quantity of dust in the atmosphere. Here, ceramic industries are those industries which makes tiles, flooring tiles. देखिए आपने आपके घर में flooring tiles लगती है, and then toilet sheets जो जिसकी बनी होती है, they are made up of soapstones. So they are formed in ceramic industries. They are the product of ceramic industries. So huge quantity of dust in the atmosphere is released due to grinding of calcite and soapstone. It settles down on the land. It slows or stops the process of infiltration of water into the soil, and that also leads to land degradation. Next is industrial waste and effluents are also responsible for land degradation. We releases huge amount of industrial wastage, or we discharges industrial waste in open, and that also leads to land degradation. Now, let us discuss about the methods to solve the problem of land degradation. First, plants more and more trees, that is afforestation. Proper management of grazing can help to control land degradation. Means controlled or managed grazing should be there. Stop overgrazing, or we can say. Third is planting of shelter belts. Means planting the trees in a row, ROW, in row, line में, पंक्ति में trees को plant करना around a desert or around industry. Planting of shelter belts.
Grow more and more thorny bushes in deserts for stabilizing the sand dunes, ताकि sand dunes stable रहें, शिफ्ट ना हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए डेजर्ट्स में, बुशेस को। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, controlled mining activities means we should not left open them after extraction of minerals. We must plant more and more trees on the in the mining areas. After the completion of mining process, we must plant trees in such areas. Then next is proper discharge of industrial effluents, or to set up more and more water treatment plant.